Hi, I'm Eijaz Khan, and you're watching me on the Sunny G Show by Rohit Consulting Firm. And don't forget to like, share, and subscribe to Subhojit's YouTube channel. यार सबसे बड़ी बात शाहरुख सर के बारे में ये है कि हम उन्हें जितना प्यार देते हैं वो उतना ही प्यार हर एक इंडिविजुअल में बांटते हैं. When he finishes his shoot, he goes to his van, he changes, he comes back. इंडिविजुअली हर एक इंसान का हाथ मिला के हक करके उनको प्यार दे गए. अभी पवित्रा है और कुछ लोग हैं मेरी जिंदगी में जिनसे मैं अपने आप से ज़्यादा प्यार करता हूँ. It is a responsibility of every couple to make each other comfortable. I want to do quality work and not just कि ऐसे अकाउंट बढ़ाते make रहे. hay while the sun shines, पैसे कमाते रहो. Alright दोस्तों, this is something that I've been planning for the longest time. बहुत टाइम से मैं मैसेज कर रहा था सर को. He's one of my favorites, not just as an actor but also beyond as a human being. बहुत प्यार से बात करते हैं मेरे साथ, and I think that is the most attractive feature about this man. You all know him, the one and only Eijaz Khan. And sir, thank you so much. Every time बहुत मजा आता है. Last time when we met, it was during City of Dreams. एक पर्सपेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव रहता है whenever you're doing it, like whenever we chat regarding any particular project. But I think this is going to be a real heart to heart one without any project. So let's do it. मुझे what fascinates me about your career is that कि म्यूजिक वीडियोस से लेके टीवी शोज, वेब एक्सेट्रा, एवरीथिंग, अगर वो एक कंपाइल मतलब होता है ना वो थाली जिसमें आप सब थोड़ा बहुत रखते हो, यू हैव डन ऑल ऑफ इट. And at the same time, you have people still can't say कि यार we have seen too much of Eijaz in TV or we have seen too much of Eijaz in web series. कोई perfect combination या वो मसाले वाला ये तो नहीं होता, खाना नहीं है कि वैसे बन जाए. But at the same time, I feel कि वो balance कहीं ना कहीं रहा in your career. There are a few reasons for it. I think. Yeah. मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सका क्योंकि मैंने अपना करियर डांस से शुरू किया था. जी. अनफॉर्चुनेटली मुझे सिंगिंग नहीं आती तो वो भी वो भी हो जाता. मेरे भाई बहुत अच्छा गाते जी. मेरे अब्बा बहुत अच्छा गाते जी. हमेशा दुख रहा है कि जी. मुझे अच्छे से गाना नहीं आता. एनीवे, क्या हुआ जब डांसिंग कर रहा था तो थोड़ा ब्रेक लेके मैंने एडवर्टाइजमेंट्स में थोड़ी एक्टिंग की. राइट. उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि ये कर सकता हूँ, ये समझता हूँ, मैं डायरेक्टर्स को समझता हूँ और डिलीवर भी कर सकता हूँ. तो उसके बाद सोहेल भाई ने मैंने भी उसको दिया. फिर आई डिड टेलीविजन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. But fortunately, yeah, unfortunately, there were always some breaks in my career. I did television for 4.5 years. And then I got a 3-film contract with PNC. I did the Ramesh Darshan's Bhavra. Unfortunately, that didn't release. So there was a gap of almost 2.5-3 years. Then I took a Bhaskar Bharti. Then I gave a gap. Maybe the film should release. Kuch release hui, kuch nahi hui. Then Tanu Ajmanu ke baad I realized कि यार this is what I want to explore. I want to work with good makers. I want to work with I want to do quality work and not just ऐसे अकाउंट बढ़ाते रहे. hay while the sun shines, पैसे कमाते रहो. वो एक किस्म से ड्रॉबैक भी था. मैं जितना कमा सकता था और 3-4 घर ले सकता था वो मैंने नहीं किया. लेकिन 2015 के बाद भी थोड़ा ब्रेक मैंने लिया था पर्सनल रीजंस की वजह से. और उसके बाद 2019 में जब सिटी ऑफ ड्रीम्स हुआ तो लॉजिकली मैं टेलीविजन या एक ऑनगोइंग थिंग नहीं कर सका. फिल्म्स कर रहा हूँ, ओटीटी पर वेब शोज कर रहा हूँ. और उस हिसाब से पैंडेमिक के बाद, पैंडेमिक में भी थोड़ा ब्रेक हुआ था. उसके बाद अभी मेरे सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं. मजा आएगा एकदम. ऐसे पारू और भी चैट्स करेंगे जितने बार जो भी आएगा, विल हैव दोस चैट्स एज वेल. बट मुझे एक चीज बताइए सर, लाइक आई सेड कि देयर इज नॉट बीन एनी एग्जॉशन पॉइंट व्हिच इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉट जस्ट एनी लाइक एक्टर, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर एन आर्टिस्ट कि मुझे ये ना लगने लगे कि यार मतलब मैंने सब कुछ कर लिया. नाउ इतने सालों का एक्सपीरियंस, व्हाट इज लाइक योर बेसिक क्राइटेरिया इन टर्म्स ऑफ फिल्टरिंग कि बॉस मैं ये करूँ, शुड आई इन्वेस्ट टाइम इन दिस या फिर इसको हटाऊं, अच्छा हो सकता है, माइट नॉट बी गुड फॉर मी.
how do you do that basic bit of filtering? Because जितना मुझे पता है आप शायद बहुत ज़्यादा suggestions नहीं लेते हो and kind of listen to your own heart and think. तो वो कैसे करते हो? Like how do you do that filtering? There are a few people that I talk to. जैसे आपने बोला कि suggestions नहीं देता. One is Pavitra, of course. Yeah. Then Imran, my brother. And एक दो लोग हैं जो इंडस्ट्री में जिनसे मैं पूछता हूँ कि कैसे मेकर्स हैं. Apart from that, script is key. Yeah. When I get a narration of the script and I get a synopsis and then I get a script, then I realize what the character arc is. I realize कि जो मेकर्स हैं उन्होंने भी कितना एफर्ट डाला है स्क्रिप्ट को निहार के निकालने में. Then my job becomes easy. After that, I see मैं अपने आप को उस कैरेक्टर में कंफर्टेबली देख सकता हूँ या नहीं. एंड इट वर्क्स बोथ वेज. कभी कभी मैं जानता हूँ कि मैं इस कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह से निभा सकता हूँ, इसलिए मैं करता हूँ. कभी कभी मैं इसलिए करता हूँ कि मुझे डर लगता है कि मैं नहीं कर सकूँ. जैसे फॉर इंस्टेंस तनुबद मानुबी जो मैंने किया था, मैं नॉर्थ इंडिया से नहीं, मैं पंजाबी बोल नहीं सकता. इट इज़ वेरी इजी टू टर्न दैट सरदार जी टू अ कैरेक्टर, Right. एंड आई डिडंट वांट टू डू दैट. So I was really worried, but then I took it up as a challenge, and alhamdulillah, अच्छे से हो गया. Yeah. So it works both ways, but primarily script, director, and of course you have to see if the makers are going to mount it right and it's going to come out. Otherwise, जंगल में मोर नाचेगा कोई नहीं देखेगा, पता नहीं होता. Yeah, but you mentioned this very thing about taking suggestions, not like taking suggestions, but at least discussing. You mentioned about Pavitra being one person. But she also discussed the same with you. Ki, listen, this is what has come my way. Or what do you think about this? As a conversation goes there. Absolutely, yeah. I think we looked at each other as a team, a part of a team. It is imperative, and we are, I don't know how to put it, we are more like a very grounded traditional couple. There are some aspects that she might not be comfortable with what happens with my character. There could be things that I might not be comfortable with what happens with her character if she's taking up a new project or something. And I think it is a responsibility of every couple to make each other comfortable and make sure that हमारे पर्सनल डिसीजंस उन पर किसी भी तरह से भारी ना पड़े. Right. एक अच्छे इंसान की भी वो एक ये होती है, और एक कपल में तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है. सर मुझे एक चीज़ बताइए, कुछ देर पहले यू सेड इन अ वेरी आई थिंक इंटरेस्टिंग मैनर कि मैंने पैसों के लिए वैसे कभी काम नहीं किया है, अगर होता तो और 3-4 बंगले खरीद लेता, ये होता वो होता. द प्रोफेशन ऑफ एक्टिंग इन इटसेल्फ इज अ वेरी इनसिक्योर प्रोफेशन. कभी कभी काम रहता है, कभी कभी काम नहीं रहता है. एंड एट द सेम टाइम वी ऑल देयर इज अ सर्टेन लाइफस्टाइल एज वेल जो एक्टर्स को कहीं ना कहीं जाके मेंटेन करना होता है. So it's like poles apart from each other. आप समझ रहे हो ना, एक के लिए for that thing to happen you need constant money, and at the same time you are also taking decisions which keeps money away. तो ये इसके लिए जो हिम्मत है, I think that requires a lot of guts and courage. Especially I can also relate because I have also left some sort of comfort zone to start something on my own. तो मैं समझ सकता हूँ वो चीज़. अभी तो चलो ठीक है सर, so many years settled in every way, but initially when you were doing it, what was your source of courage to do that? मुझे वो जानना है. Yeah, eventually you have to survive in every industry. So sometimes you have to take tough calls. I did some films which, on hindsight, मुझे लगा कि नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त मैंने पैसों के लिए किया क्योंकि पैसे कम थे और किया. तो अभी इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो? आप अपने क्राफ्ट पर और हार्डवर्क कर सकते हो, और अगले प्रोजेक्ट में इफ यू हैव लेट any of your supporters down, you can make sure that they believe in you again. Right. Apart from that, it is a very good question, but the answers could be very wide and array. It depends on the individual कि उस वक्त आपकी प्रायोरिटी क्या है. इस वक्त मेरी प्रायोरिटी है कि I keep doing work that is better than what I did in my last project. Because I think शेल्फ लाइफ उम्र के साथ कम होते जा रही है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज और बढ़ते जा रही हैं. तो मेरी भूख भी बढ़ते जा रही है.
सो आई थिंक वही मेरी प्रायोरिटी है. एवरी डे आई लुक फॉरवर्ड. ये जो भूख का आपने पॉइंट बोला, you see someone like a Dharmendra sir who's at this age doing so wonderfully with Rocky or Rani. Bachchan sir, we all look upon him. He's actively working. So do you kind of look around these people as well? एक होता है self motivation, दूसरा होता है when you look around people कि यार ये इंसान अभी भी इतने अच्छे से काम कर रहे हैं. How fantastic is that? Like who are the individuals that you look around yourself apart from your self motivation factor? यार जहाँ से भी मोटिवेशन मिल जाए, I'm thankful for it. हाँ. Of course, we have stalwarts in the industry that I look up to. जैसे दो नाम तो आप ही ने लिए. जी. कुछ और एक्टर्स हैं जिनको मैं फॉलो नहीं करता, बट आई लव द बॉडी ऑफ वर्क. नसीर सर है, परेश रावल सर है. अभी और चीज़ें दिमाग में नहीं आ रही क्योंकि मेरी दवाई अभी भी काम कर रही है मेरे दिमाग. मैंने सर्दी के लिए दवाई ली और कुछ नहीं. हाँ, वो क्लियर कर दिया सर ने. तो बहुत कुछ है, लेकिन एज एन आर्टिस्ट यू हैव टू बी अवेलेबल एट एवरी मोमेंट एंड यू हैव टू बी ट्रू टू दैट मोमेंट एंड बी रियल इन दैट मोमेंट सो दैट यू कैन अब्सॉर्ब एवरी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दैट कम्स अराउंड यू. एज ऑफ नाउ, इस वक्त व्हेन आई हियर योर स्टोरी, यू आर माय इंस्पिरेशन. How sweet. You know, What a cute movie. so it is not कि मैं 2-3 लोगों को पकड़ के उनके नक्शे कदम पर चलना चाहूँगा. आपको वो मेंटरशिप आप कर सकते हैं, बट दुनिया में, ज़िंदगी में जिस पोजीशन पे मैं अभी हूँ, आई लुक फॉर स्मॉल इंस्पिरेशंस, आई लुक फॉर स्मॉल encouragement from everywhere and I thrive. क्या बात है, हाउ स्वीट. कुछ दिन पहले एक ट्रेलर आया जिसने धमाल मचा के रख दिया. आई विल नॉट गेट टू डीप इनटू द डिटेल्स. वो 7th को सबको पता चलेगा व्हेन द प्रोजेक्ट कम्स आउट. गाइस, वी आर टॉकिंग अबाउट जवान एंड शाहरुख खान. सर का एक सीन हम लोग ने देखा, वो एक ही सीन काफी था ट्रेलर में. लेट मी नॉट गेट टू डीप इनटू दैट. 7th को तो लोग देखेंगे ही. आई वांट टू अंडरस्टैंड, यू हैव नोन शाहरुख सर फॉर सो मेनी इयर्स. प्लीज टेल मी अबाउट योर फर्स्ट एवर इंटरेक्शन विद हिम, जिस टाइम से आप उनको जानते हो, एंड जवान के सेट्स पे जब पहली बार मिले, भाईचारा लगा, बिकॉज ही सो वार्म एज एन इंडिविजुअल. ही मेक्स द अदर पर्सन फील सो हैप्पी एंड इम्पोर्टेंट विद हिज पॉजिटिव वाइब. वो फर्स्ट मोमेंट व्हेन यू सॉ हिम ऑन सेट्स आफ्टर सो मेनी इयर्स, बिकॉज आप दोनों ही बिजी रहते हो अपने स्केड्यूल्स में, उतना मिलना शायद नहीं हो पाता. व्हाट वाज इट, व्हाट वाज द वाइब लाइक? मुझे बस वो जानना है. फिल्म तो हम लोग देख लेंगे, ये कहानी हम लोग को पता नहीं चलेगा. यार, सबसे बड़ी बात शाहरुख सर के बारे में ये है कि हम उन्हें जितना प्यार देते हैं, वो उतना ही प्यार हर एक इंडिविजुअल में बांटते हैं. You know, when he comes on set, of course, everyone's in a hurry to start. But when he finishes his shoot, he goes to his van, he changes, he comes back. Individually, हर एक इंसान का हाथ मिला के हक करके उनको प्यार दे गया. And you feel so special. It's like your day is made, your month is made, your life is made. Shah Rukh hugged me. Shah Rukh told me how are you. He will get personal. He will ask if he remembers something about you. मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन उनके साथ था, कब मैंने काम किया था उनके साथ, आई थिंक 2000 में, जब वेम्बली अरीना में मैं गणेश हेगड़े के साथ डांस कर रहा था, उनके ट्रूप में डांस कर रहा था. और शोमैन ऑफ द मिलेनियम, आई थिंक वो शो कर रहे थे, वह शाहरुख सर वाज पेइंग ट्रिब्यूट जी बगीरा से. वह शाहरुख सर, आई बोल दो बगीरा को वहाँ पे. आई बोल दे बाबा, वी हैव अ स्पेशल cameo appearance as well. I think the moment of the interview. शाहरुख सर वाज पेइंग ट्रिब्यूट टू राज कपूर सर. तो उनमें, उस शो में मुझे कुछ स्किट्स करने का मौका मिला. तो वहाँ हमारी थोड़ी बातचीत हुई थी. ही वुड गाइड मी कि इसको ऐसा कर, वैसा कर. इनफैक्ट इस शूट में भी ही डिड गाइड मी कि यार ऐसा करेगा तो अच्छा लगेगा. और आई रिमाइंडेड हिम कि सर, आई वर्क विद यू, मैं डांस करता था. ओह, वेरी गुड, अच्छा करना है. And there was an interaction where I was supposed to physically get close to him, push him or something. Like डर मत रहो, आराम से कर, मैं कर लूँगा. Of course, you feel a little worried, यार शाहरुख है, मुझे धक्का देना, ये करना, वो करना, but he goes out of his way to make you comfortable, and that is a hallmark of a great actor. When you discuss, I think, work projects, एक होता है सेल्फ सेटिस्फैक्शन, ऑडियंस को इवेंचुअली जाके पता चलता है, बट आई थिंक द पीपल
who get to know about whatever project you're doing apart from yourself first is your family, right? So whenever you come up with any project, वो City of Dreams हो या जवान हो कुछ भी हो, whenever you share your reaction with your family, घर से क्या reaction आता है? Because I'm sure right from the time you started till now, I mean वो थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया होगा रिएक्शंस में. पहले पहले आई थिंक फैमिली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती थी, यू नो, ब्रदर्स एक्सेट्रा वगैरह. अभी शायद कुछ और हो गया होगा. सो हाउ हैज दैट चेंज्ड? What matters to me is how my father feels. We've had a very sketchy kind of, not sketchy, a little अजीब सा रिश्ता था बचपन में. But when he started understanding my work, he's been my biggest supporter. He will see everything, बार बार देखेंगे, मुझे रिएक्शन देंगे. एंड आई थिंक उनके आइडल है दिलीप कुमार सर जी. तो मुझे बताएंगे कि वो ऐसे करते थे, तुम्हें ऐसे करना चाहिए. इस चीज़ में मुझे उनकी झलक दिखी. एंड आई लव दोज कॉन्वर्सेशंस दैट आई हैव विद हिम. ही इज़ ऑल्सो वेरी हैप्पी दैट आई एम डूइंग वेल. एंड मोर देन एनीथिंग, जब उनके दोस्त उनको फ़ोन करके बोलते हैं हमने इजाज को इसमें देखा उसमें देखा, तो ही कॉल्स मी. सीना चौड़ा हो जाता होगा ना एकदम. He calls me, but you know, he's not. हम लोग उतने close नहीं है कि he'll say a lot of things, but I can hear it in his voice, and I think. कोई बात नहीं. I think people have different ways of expressing. Yeah. Some are But, extra expressive, some are a little subdued. I I believe. think that is my biggest achievement. I think उससे ज़्यादा कुछ हो भी नहीं सकता. When the people who have known you right from the time you're born, I think उससे ज़्यादा कुछ तो है नहीं. Last two questions अगर मैं आपको पूछूं, वेब है, OTT है. यू मेंशन्ड अबाउट दिस वन फैक्ट कि यार गाना अगर मुझे आता है तो मज़ा आ जाता, कुछ बाकी रहता नहीं. बट उसके अलावा भी इज देयर एनी हॉबी दैट यू वांट टू पिक? बिकॉज राइट नाउ बाय गॉड्स ग्रेस यू आर इन अ पोजीशन वेयर यू कैन आल्सो हैव अ लॉट ऑफ मी टाइम. यू नो, पहले पहले एक हसल होता है कि यार ये करूँ वो करूँ. एक चीज हो जाने के बाद काम भी करते हैं हम लोग, एंड एट द सेम टाइम वी फाइंड मी टाइम फॉर आवरसेल्फ, जहाँ पे वी माइट वांट टू पिक अप अ न्यू स्किल वगैरह. ऐसा कुछ स्किल है दैट यू वांट टू पिक अप? बहुत कुछ है यार. मेरा गिटार अभी भी रैप्ट है अंदर. हाँ. मैं निकाल नहीं पाता उसे. I think it is very important to be dexterous as you age, Right. because that is exercising your brain. I've started brushing with my left hand now. ओह, ये तो ट्राई करना पड़ेगा मुझे लगता है. करो यार. कल सुबह. First thing in the morning, you start giving your brain a massage. Yeah. And cognitive abilities को improve Right. करने के लिए मैं बहुत कुछ करते रहता हूँ. क्या है, मुझे कुछ कोर्सेज करने हैं यार, जो शायद मैं करूँ अभी जो मुझे टाइम है. और फिजिकली मैं अपने आप को बहुत मार चुका हूँ. इनफैक्ट लास्ट ईयर वाज रिडन विद इंजरीज. I broke 2 metatarsals here. I tore my Achilles tendon. I got it repaired. Then I'm undergoing rehab right now. So playing football is out of the question. That is my biggest regret. तो पूरी ज़िंदगी फुटबॉल खेलता था लेकिन अभी खेल नहीं पा रहा. इंशाल्लाह देखेंगे. But apart from that, I'm trying not to push myself physically. I want to even out my physicality as much as possible. In fact, जब मैं रोल्स भी चूज करता हूँ, I try to choose roles now that are not like most of the roles that I choose. They are of army officers or police officers or something, where you have to be of a certain build. Right. The next project that I'm doing, I had a proper discussion with the director, with the writer, with the showrunner, and they told me we want it to be as thin, as normal as possible. So I'm consciously choosing those projects. I also dub for South films, and I want to work on my voice projection. So that is something that I'm learning on the go. तो यार ये सब चल ही रहा है. बाकी जितना भी मौका मिलता है, आई थिंक अगर आप खिड़की के पास बैठ के बाहर भी देखते हो, and you try to be in the moment and you try to be meditative, that helps in your craft and that helps in your life. Absolutely. Last question, sir. अगर before we wrap this chat, मैंने आने के पहले I was just 15 minutes before I came over here. मैंने Google में search किया एजाज खान. I went to the news section. The news section is filled with headlines like Eijaz Khan opens up on marriage with Pavitra Punia, this, that, वगैरह etc. वगैरह फलाना ढिंकाना. मुझे वो चीज़ पे नहीं जाना. But what I really find inspiring is that
जितना भी प्रेशर हो आसपास, जितने भी लोग बोले कि नहीं करो 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 एक्सेट्रा, you choose your own time, not just professionally in terms of what you want to do, but also personally. We ठीक choose. हाँ, you choose. Like, I mean, since I'm talking to you, I'm mentioning you, Yeah. but of course it's a collective decision together. uh, but always it's like, since I'm talking about your professional part as well, you select your own timeline, which is I think very admirable. And it also proves the fact कि कोई external दबाव से आप कभी आपको फर्क नहीं पड़ता. मुझे प्लीज बताइए कि when you are so headstrong mentally, does it come from a sense of results that you have gone in the had in the past with that kind of a mindset, because you know कि यार whenever I have had that kind of a mindset, things have worked out on my way, so now also मुझे कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है. नहीं यार, वो आई थिंक वो दैट्स अ पार्ट ऑफ माय पर्सनालिटी ट्रेट. हेडस्ट्रॉन्ग आई डोंट नो, बट इफ यू हैव कुछ क्लैरिटी है अगर आपके दिमाग में कि But आपको ये headstrong I think comes from clarity. क्लैरिटी से वो एजुकेटेड ओपिनियन बन जाता है. Hmm. हेडस्ट्रॉन्ग हैज सम काइंड ऑफ नेगेटिव कनोटेशन कि मुझे ये करना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी को क्या अफेक्ट हो रहा है, मैं वो करूँगा. मैं शायद पहले वैसा था, लेकिन अभी पवित्रा है और कुछ लोग हैं मेरी ज़िंदगी में जिनसे मैं अपने आप से ज़्यादा प्यार करता हूँ, और मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है कि मेरे डिसीजंस या करियर चॉइसेस या जो भी आप लाइफ में डिसीजन जो लेते हो, उससे उन पर क्या फ़र्क पड़ता है, क्या असर पड़ता है. तो मेरा माइंडसेट इस रिश्ते में बहुत बदल गया है, ग्रो हुआ है. पहले मैं सोचता था नहीं यार, दिस इज़ ये कंट्रोलिंग है, या ये दिस इज़ नॉट कंड्यूसिव टू माई फ्रीडम. उतना भी फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इवेंचुअली आई थिंक 90% ऑफ योर हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम योर फैमिली. सो आई वांट टू कीप माय फैमिली. अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक मेरे बेसिक पर्सनालिटी ट्रेट्स है जो मैं चाहकर भी नहीं बदल सकता. अगर आप सिस्टमैटिकली सोचते हो, क्लैरिटी वाइज सोचते हो, तो आप एक एजुकेटेड ओपिनियन रखते हो और उस पर आपको कायम रहना चाहिए. Having said that, जितने भी हो, I have made tons of mistakes. I have had part and parcel of stupid hiatus from work for no reason. I have taken time off where I shouldn't have taken time off. I have glorified issues which were just regular issues. I have played the victim. I have done a lot of stupid shit. But I don't think, if I don't recognize my mistakes, I will not be able to correct them. I will not be able to grow. And that is a part of life, and that is a part of the human process. But I think वो self reflection and acceptance is the key. You know, बहुत important. a lot of people might do a lot of things अंदर ही अंदर जानते हैं, but it takes I think guts to say it out in the open. I think as an artist, आपको अपने असल जिंदगी में बहुत authentic रहना पड़ता है. I'll tell you why I think that. My profession is to lie. My profession is to lie so convincingly कि पूरी दुनिया कन्विंस हो जाए. अभी वो इक्वेशन को इक्वेट करने के लिए मुझे अपने असल जिंदगी में उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए ब्रूटली ऑनेस्ट रहना. Very honest. तो वो इम्पोर्टेंट है. अगर आप खुश हो तो खुश हो, ना खुश हो तो ठीक कर दो. क्या बात है. I think we're ending this chat on a very खुश note. All I can say is that your priority right now is to keep your family happy. आप खुद भी खुश रहो, फैमिली को भी खुश रखो, अपना ध्यान रखो. You've had a lot of injuries in the past, and I think whatever health issues वगैरह कुछ भी that has been there over Health the issues years. have happened because of a lot of traveling. Hmm. मतलब I've been visiting 3-4 cities, countries, तो वो होते रहता है, कोई बात नहीं. चलेगा. I think वो भी मिट जाए, projects आते रहे. We also keep doing these kind of chats. I think that is all that I'll want. Let's wish Eijaz sir all the best for everything that he does in the future. We have some lovely cameo appearances as well. This is the highlight of the chat. ये मैं इसको montage में भी डालने वाला हूँ when I put it out. But thank you so much, sir. Thank you. It's a pleasure. My pleasure. बहुत time से we were trying to plan this, and I'm so grateful to you. You actually agreed to do this. You invited me so sweetly at your place, and we actually had this really cool shoot. Thank you so Thank much. you. It's a Appreciate it. pleasure. Good luck for your project. Thank you so much, sir. Thank you so much. Guys, that's a wrap on the Sunny G Show by Rohit Consulting Firm. This is your host Subhojit with the one and only Eijaz Khan. We'll see you again with another interesting episode very soon. Please go and watch Jawan in theaters near you. 7 September is the date. देखो, मजे करो, फैमिली के साथ देखो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किसी के साथ भी देखो.
but dekho, that is most important. Thank you so much. Thank you.